Welcome to this video. In this video, we are going to discuss some selected question from the exercise of section 2.5, which discussed in which we discussed the change of basis matrix, coordinate matrix. Okay, so we will start with the question number one, and it says label the following statement as true or false. Okay, so let us discuss this. In this question, we are given that suppose that beta is uh, x1 x2 xn and beta prime is x1 prime x2 prime and xn prime are ordered basis for a vector space, and q is the change of coordinate matrix that changes beta prime coordinates into beta coordinates. Then jth column of q is xj beta prime. ओके, हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ऐसा होता है. सो फ्रॉम दी, मैं यहाँ पर लेबल कर रहा हूँ, दिस इज. सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एंड ए. So we know that q is defined as coordinate matrix of I from beta prime to beta. ठीक है, अब यहाँ पर हमें बीटा गिवन है x1 x2 एंड सो ऑन xn, एंड बीटा प्राइम गिवन है x1 प्राइम x2 प्राइम एंड सो ऑन xn प्राइम. ठीक है, तो जब हम q को आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले हम मान लो x1 के लिए ही लिख रहे हैं. ठीक है, तो वी विल आइडेंटिफाई i ऑफ x1 प्राइम एंड देन वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर दिस. ठीक है, तो इट विल बी इन b. ठीक है, सो हमने क्या किया, सबसे पहले बीटा प्राइम से, अगर बीटा प्राइम नीचे लिखा हुआ है तब हम ऐसा कर रहे हैं. अगर ये बीटा यहाँ नीचे लिखा हुआ होता तब हम यहाँ बीटा से कोई एलिमेंट चूज करते. ठीक है, सो बीटा प्राइम से वी चूज एन एलिमेंट x1 प्राइम एंड देन दिस इज सेम इज x1 प्राइम b. Okay, now what is this? This is the coordinate vector, coordinate vector of x1I related to basis beta. ओके, अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं ये क्या बनाएगा. अगर हम इसका मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला अगर मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम बनेगा. तो अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू हमें ऐसा दिखेगा, दिस इज द मैट्रिक्स एंड आई एम राइटिंग द फर्स्ट कॉलम. द फर्स्ट कॉलम विल बी x1 prime beta. The second column will be x2 prime beta and so on. इस तरीके से हम इस कंप्लीट मैट्रिक्स Q को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो हो सकता है x1 इस तरीके से मिला हो मैं, x1 बीटा इज इक्वल टू सपोज a11 a21 a31 एंड सो ऑन, क्योंकि इसके अंदर n एलिमेंट है. सो a3n सॉरी an1, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर हो गया फॉर x1 प्राइम. तो यहाँ पर कौन आएगा, ये वाला वेक्टर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस Q मैट्रिक्स जो कि बीटा प्राइम को बीटा में कन्वर्ट कर रही है, तो उस केस में इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो इस तरीके से होगा. इसी तरीके से जेथ कॉलम क्या बनेगा, जेथ कॉलम विल बी इक्वल्स टू, suppose this is like this and I'm denoting this as jth column. Okay, so this is our jth column. Jth column looks like xj prime and coordinate vector of xj prime in beta. Okay, so this will be the answer. Now अगर हमें ऐसा कुछ गिवन, ओके, मान लेते हैं if q is
change of coordinate matrix that changes beta coordinate into beta prime coordinate. Okay, beta prime coordinates, then q क्या बनता है, q will be equals to I बीटा टू बीटा प्राइम। ओके, और उस केस में q का जो जेथ कॉलम होता वो यहाँ पर एक्स जे इन बीटा प्राइम, इस तरीके से हम देते हैं। ओके, एंड in this case this is important। okay, and in this case jth column of q is x j coordinate vector of x j in beta prime related to the beta prime basis। ठीक है, so now let us come to the question। so here हमें ये कह रखा है if beta prime coordinates change into beta coordinates then the jth column must be x j prime beta। okay, so this statement is false।